Today we will discuss about the physiology of the synapses. Before that, we will discuss about the neuron. Neuron basically is structural and functional unit of the nervous system, in which neuron divided into three parts. First is cell body, second is dendrites, and third one is axon. So these three components are combinedly known as neuron. Now we come forward towards the synapses. So synapses is the junction between the two neurons. दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं. In synapses basically is not an anatomical continuity. It is a physiological continuity in which action potential transfer from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. Now, if we talk about the classification of the synapses, the classification of the synapses is divided into two categories. First one is anatomical classification and second one is functional classification. If we talk about the anatomical classification, it depends upon anatomical classification is formed. Synapses is formed by one neuron ending on the cell body. It may be axonotmic, exodendritic, and exosomatic. Likewise, if we talk about the axonotmic synapses, in which we see the axon of one neuron make junction with another neuron axon. If we talk about the exodendritic synapses, in which one neuron axon make synapse with the another neuron dendritic fibers. If we talk about the exosomatic synapses, in which axon of one neuron ends on soma, we can say cell body. So this one is the anatomical classification of the synapses. Now we talk about the functional classification. Functional classification of the synapses is on the basis of mode of impulse transmission. According to this, synapses classify again in two categories. First, electrical synapses and second one is chemical synapses. Now, if we talk about the electrical synapses in which physiological continuity between the presynaptic and postsynaptic neuron is provided by the gap junction. A gap junction is a connection between the two neurons at the synapse. So we call it is electrical synapses. Here, the electrical exchange of ions between the two neurons by the gap junction. So basically gap junction क्या होता है? It is a very thin connection between the two neurons at the synapses anatomically. So here the impulse in form of action potential transmit from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. Now, if we talk about the chemical synapses is the junction between the nerve fiber or muscle fiber, or maybe it may be a nerve fiber to nerve fiber, where the signals are transmitted by the neurotransmitters. Neurotransmitters are specifically some chemical substances which is responsible for to propagate the message of a particular message or a signal from presynaptic neuron to
postsynaptic neuron. Likewise, if we see the chemical synapses, there are the chemical components in form of neurotransmitter like the prostaglandin. If we talk about the GABA, if we talk about the रिपीट कर लो कभी. Chemical synapses is the junction between the nerve fiber and muscle fiber, or between the two nerve fibers, through which the signals are transmitted by the neurotransmitters. Neurotransmitters are like the GABA and now we talk about the functions of the synapses. The functions of the synapses are mainly transmit the impulses, that is the in form of action potential, from one neuron to another neuron, or some synapses may be inhibit the impulses, so the action potential will not transmit to further neuron. So on the basis of the function, the synapses are divided into two categories. First is excitatory synapses and second one inhibitory synapses. If we talk about the excitatory synapses, which transmit the impulses in excitatory form, means if action potential in same intensity, same potency, it will transmit to next neuron same impulse at the same intensity. But if we talk about the inhibitory synapses, in which the transmit of the impulses from one neuron to another, it inhibit by the neurotransmitter. It will come like that, the message or action potential will not transmit to further. Now we will discuss about the first excitatory function or excitatory postsynaptical potential. How action potential transmit from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. Excitatory postsynaptical neuron is the non-propagated electrical potential that develops during the process of the synaptic transmission. When the action potential reaches the presynaptic axon terminal, the voltage-gated calcium channels at the presynaptic membrane are opened, and now calcium ions enter into the axon terminal from extracellular fluid. So, at the junction, synapse junction, we see that one is the presynaptic neuron and another one is the postsynaptic neuron, in which presynaptic neuron, what is happening? Arrival of action potential, reach here action potential, and what will happen? Around the calcium channels are open in presynaptic neuron. Okay. Now, when opening of the calcium channel, the influx of calcium ion, that means calcium ions enter into the presynaptic neuron to cross the membrane by the passage. Now, when calcium influx, the opening of the vesicle, जो वेसिकल्स होती है लेयर प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में, उनकी ओपनिंग होगी जैसे वो कैल्शियम अंदर जाएगा प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में, एंड वो जो वेसिकल्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटिलकोलिन रिलीज करेंगे. देन व्हाट विल हैपन? एसिटिलकोलिन रिलीज होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट. व्हाट इज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट? प्री synaptic neuron and post-synaptic neuron. There is a space in between that is synaptical cleft, in which these acetylcholine vesicles release the acetylcholine in synaptical cleft, and the synaptical from synaptical cleft these acetylcholine reach to post synaptic neuron. This one is the presynaptic neuron
and this one is the postsynaptic neuron, and this one is the synapse. So action potential is transmitted from one presynaptic to postsynaptic. Now, what happening in postsynaptic neuron? At the surface of the postsynaptic neuron, there are the receptors are present. The receptor formation of the acetylcholine receptor complex. जो एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, वो कंबाइंड हुआ किसके साथ? रिसेप्टर, जो कि कहां पे प्रेजेंट है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे. ओके, नाउ इससे क्या होगा? ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल एंड इन्फ्लेक्स द सोडियम आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. नाउ व्हाट इज द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड? द फ्लूइड which is outside the neuron is known as extracellular fluid, where the sodium ion are present. So when the acetylcholine make complex with the receptor, the sodium ion channel opening and sodium का influx होगा post synaptic neuron. So पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जब सोडियम ज्यादा जाएगा तो किसका डेवलपमेंट होगा? ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिकल पोटेंशियल. तो हम जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं एक्साइटेटरी मैकेनिज्म, कैसे एक्साइटेटरी इंपल्सेस ट्रांसमिट होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. सो व्हाट इज हैपनिंग इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन? रिसेप्टर से कॉम्प्लेक्स किया, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, एंड सोडियम आयन के इन्फ्लक्स होने की वजह से एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो गया. अब क्या होगा? ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल इन इनिशियली सेगमेंट ऑफ एक्सॉन. ठीक है, देन इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड डेवलप द एक्शन पोटेंशियल एंड स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू एक्सॉन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो जैसे ही सोडियम आयन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर हुआ तो जो इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो ट्रांसमिट होगा कहां पे? आगे फर्दर न्यूरॉन की बॉडी में, एंड लाइकवाइज इट विल ट्रांसमिट टू नेक्स्ट न्यूरॉन. इस तरीके से ये एक्साइटेटरी मैकेनिज्म होती है. तो वी रिकॉल दैट फर्स्टली देयर आर द टू थिंग्स, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. In presynaptic neuron is what is happening. First of all, action potential reach the terminal of the axon and opening of the calcium channel ions. Calcium channel open होगा. Then what is happening? Influx of the calcium ion into presynaptic axon terminal, and from where the जैसे ही action calcium ion enter करेंगे presynaptic neuron में, then vesicles release the acetylcholine, and acetylcholine जैसे release होगा, then it comes in synaptical cleft and bind with the receptor of the post synaptical neuron terminal. Okay, when it makes a complex with acetylcholine and the receptor complex, what will happening in post synaptic neuron? Post synaptic neuron sodium channels will open and influx of the sodium ion from extracellular fluid. जो extracellular fluid से उससे sodium ions post synaptic neuron में enter करेंगे and develop the excitatory post synaptic potential that will transmit the action potential through the axon to post synaptic neuron. Likewise फिर वो next neuron में इसी तरीके से transmit होगा. So we will see here like how excitatory mechanism is going through. Now we will discuss about the inhibitory function. How the inhibitory mechanism is work here. Basically, inhibitory mechanism is divided into different categories, likewise of around 5 categories, but in which one is very important. That will be discussed here now. The inhibition of synaptic transmission by the postsynaptic or direct inhibition. If we talk about the postsynaptic or direct inhibition, postsynaptic inhibition
is the type of the synaptic inhibition that occurs due to the release of inhibitory neurotransmitter. ठीक है, that word is inhibitory neurotransmitter. Inhibitory neurotransmitter means neurotransmitter which inhibits the action potential to spread the further. So if we see here the release of the inhibitory neurotransmitter from the presynaptic terminal instead of the excitatory neurotransmitter substances is called direct inhibition, and inhibitory neurotransmitter are gamma aminobutyric acid, especially we known as the GABA, and dopamine, and another one is glycine. These three are come under the inhibitory neurotransmitter. One more thing, in previous we discussed about the excitatory mechanism, where the acetylcholine is a excitatory neurotransmitter. Okay, so acetylcholine is excitatory neurotransmitter, and if we talk about the GABA, dopamine and glycine, these are the inhibitory neurotransmitter. Now, how the mechanism is going here? If we talk about the direct inhibition, first of all, what will happening in the presynaptic neuron terminal, and another one is the postsynaptic neuron terminal, and this one is the junction. This is the synapse. So what will happen here? The arrival of the action potential at the axon terminal, presynaptic axon terminal, where same opening of the calcium channels in presynaptic membrane. अब calcium channel open होंगे तो what will happen? The influx of the calcium ions from extracellular to axon terminal. So if we talk about the जो कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एंटर करेगा किसमें? प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में. जैसे ही एंटर करेगा व्हाट विल हैपन? इनफ्लक्स ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेसिकल एंड रिलीज ऑफ गाबा. सेम जैसे ही आपका कट रिपीट. So here in direct inhibition, we will see here the presynaptic neuron and postsynaptic neuron. In presynaptic neuron, we will see the axon terminal. Here the same action potential reach here, and what will happen? The calcium channel will open and the calcium ions enter into the presynaptic neuron, from where the calcium ions from extracellular fluid, calcium ions are present in extracellular fluid some here, and they will enter into the axon terminal in presynaptic neuron. Then what will happen? The opening of the vesicles, and what will be released? GABA. What is the GABA? Gamma aminobutyric acid, which is a inhibitory type of neurotransmitter. What will happen? The GABA release in synaptic cleft. What is the synaptic cleft? The space between the two neuron at the synapse. Okay, this is the pre and this one is the post. Okay, this one is the space. Now, if what will happen? GABA release, and GABA through synaptical cleft reach to the receptor. Receptors present at postsynaptic nerve terminal surface. जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो व्हाट विल हैपन? द गाबा विल मेक कॉम्प्लेक्स विद द रिसेप्टर्स, एंड द व्हाट विल हैपनिंग नाउ? पोटेशियम जो चैनल्स हैं दैट विल बी ओपन, and efflux of the potassium ion का efflux होगा from post synaptic neuron से
जो पोटेशियम आयन थे वो रिलीज होंगे कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. ओके, नाउ वन मोर थिंग इज हैपनिंग हियर, द ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयंस, chloride ion channels. So what will happen from these chloride ions enter into the postsynaptic neuron, chloride ion posterior postsynaptic neuron में enter करेंगे and या बेसिकली हम कह सकते हैं कि influx of the chloride ions और efflux of the potassium ions. Clear? Now what will happening? More negativity inside the postsynaptic neuron. इसकी वजह से क्या होगा, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसमें मोर नेगेटिविटी क्रिएट होगी. नेगेटिविटी मींस जो इंपल्स आ रही थी उसको डिप्रेस करेंगे. भाई पॉजिटिव आयन जो पोटेशियम के तो वो बाहर रिलीज हो रहे हैं और जो क्लोराइड आयन है वो इनसाइड आ रहे हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, नेगेटिविटी ज्यादा क्रिएट होगी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में और दैट विल क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन. हाइपरपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, आईपीएसपी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिकल पोटेंशियल जनरेट होगा. ठीक है, क्या होगा, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. सो रिकॉल द फास्टली what will happening here in direct inhibition. There are the two things happening. One thing in happening around the presynaptic neuron axon terminal and some things happening in the post synaptic neuron. If we talk about the presynaptic neuron, what will happening? Same things. Action potential reach to the terminal of the axon, and what will happening? Opening of the calcium ions and आयन चैनल्स ओपन होंगे कैल्शियम के, जो कैल्शियम को क्या कराएंगे, इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू एक्सॉन प्रीसाइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल. जैसे ही जो आपका कैल्शियम आयंस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपके प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन टर्मिनल में पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे, वेसिकल से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा उसको रिलीज करवाएंगे. जैसे ही गाबा रिलीज होगा, व्हाट विल हैपनिंग, इट विल कम्स इन सिनेप्टिकल क्लेफ्ट एंड मेक रिसेप्टर एंड गाबा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, रिसेप्टर एंड जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे. देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपनिंग, टू थिंग्स हैपनिंग. पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स होगा. जो पोस्ट साइनेप्टिकल न्यूरॉन है इसके अंदर से जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर साइनेप्टिकल क्लेफ्ट में आ जाएंगे एंड क्लोराइड आयंस भी ओपन होंगे. तो क्लोराइड आयन क्या होगा, क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किस में जाएंगे, आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएंगे. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट विल हैपनिंग, इससे क्या होगा, आईपीएसपी डेवलप होगा, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिकल पोटेंशियल डेवलप होगा और जो आपका साइनेप्टिकल ट्रांसमिशन है वो इनहिबिट हो जाएगा. सो हियर वी सी टू थिंग्स we will discuss here. Synapse, recall fastly. Synapse, what is a synapse? It is a junction between the two neurons. ठीक है, it is classified into two categories. Clear? Anatomical classification and another one, cut. Again, start. So, what is the synapse? Synapse is a junction between the two neurons and known as synapse. And synapse classified into two categories. First one is the anatomical classification. Second one is the functional classification. Anatomical classification की बात करें तो जो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के किस पार्ट से अटैच हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. ठीक है, what are the categories? Exonic synapse, exodendritic synapse and exosomatic synapse. These three categories are here. If we talk about the functional classification,
it will according to function of the classification, or we can say जो impulse transmit हो रही है उसके अकॉर्डिंग इसे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमने बताया था, डिस्कस किया था, जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है वो गैप जंक्शन के थ्रू हो रही है, और केमिकल साइनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द pass the impulse from one neuron to another neuron. Clear? If we talk about the functions, so there are the two functions, excitatory mechanism and inhibitory mechanism. Excitatory के लिए excitatory neurotransmitters are responsible, in which the acetylcholine. Or if we talk about the inhibitory neurotransmitter, then we talk about the GABA, glycine, and dopamine. These are the inhibitory neurotransmitter, and whole mechanism is going through in our action potential transmit from one neuron to another or neuron to muscular. Okay, so this one is our synapse, physiology of the synapse, how impulses transmit to one neuron to another or inhibit the one neuron to another. Thank you.